It is where our laws are framed, the country's future is debated, and the people's representatives are held accountable. It is India's seat of government, and all the important laws are passed right here in this iconic circular edifice, the Parliament of India. Namaskar, hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sansad TV on the monsoon session of Parliament. The session commenced on 18th of July and was adjourned sine die on 8th of August. The session provided 16 sittings spread over a period of 22 days. In this edition, we'll get you all the highlights of the session. Come along. Parliament of India is the supreme legislative body and a living epitome of freedom and sovereignty of the people of India. It occupies a preeminent and pivotal position in India's democratic polity. The demand for popular government and representative institutions, such as Parliament, remains central to our struggle for independence. The stalwarts of our epic fight for freedom and the founding fathers of our republic had thus conjured up a vision of Parliament as an institutional embodiment of our democracy and sovereign authority of our people. In a year, Parliament meets for the budget, monsoon and winter sessions. This year, monsoon session commenced on 18th of July. The session, which was originally scheduled to have 18 sittings from 18th of July to 12th of August, was curtailed due to completion of essential government business and the demand of members in view of two gazetted and parliamentary holidays ahead. The session commenced with customary appeal of the Prime Minister for ensuring productivity. हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। During the monsoon session, 6 bills were introduced in the Lok Sabha, 7 bills were passed by the Lok Sabha and 5 bills were passed by the Rajya Sabha. 1 bill was withdrawn with the leave of Lok Sabha. Total number of bills passed by both houses of Parliament during the session is 5. The Family Courts Amendment Bill 2022 seeks to amend the Parent Act to provide for the establishment of family courts in the state of Himachal Pradesh with effect from 15th of February 2019 and in the state of Nagaland with effect from 12th of September 2008, and for insertion of a new section to retrospectively validate all actions under the Parent Act taken by the state governments of Himachal Pradesh and Nagaland. जितने सदस्यों ने अपने अपने बातें रखे हैं, बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिया है, बिल का समर्थन किया है। सर, संक्षेप में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि भारत का हर परिवार सुखी हो, हर एक परिवार के सदस्य आपस में तालमेल रहो, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध हो, बच्चे खुशी रहे, परिवार आबाद हो। हिंदुस्तान में हर एक परिवार आबाद होगा, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। The Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022 seeks to prohibit financing of any activity in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems. It empowers the central government to freeze, seize or attach funds or other financial assets or economic resources for preventing such financing.
It also seeks to prohibit making available funds, financial assets, or economic resources for any prohibited activity in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems. We've had a prolonged discussion on the weapons of mass destruction and the delivery systems amendment bill. I compliment all the members who have spoken, and I note that there has been unanimous support for the bill, that the majority of members have actually made common points. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. The Indian Antarctica Bill 2022 provides for the national measures for protecting the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems to give effect to the Antarctic Treaty, the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, and to the Protocol on Environment Protection to the Antarctic Treaty and for matters connected. भारत के भी वहाँ 2 संस्थान हैं और दूसरे देशों के भी हैं, इसलिए ये तय किया गया इसी ट्रीटी के अंतर्गत कि एक विधान लाया जाए, हर देश लाए। एक मान्यता थी कि उसी देश का विधान या कानून उसके अपने क्षेत्र में लागू हो। अब चूंकि हमारे भी 2 संस्थान हैं, तो जाहिर है हिंदुस्तान का, भारत का ही कानून वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। यानी डीमिलिटराइजेशन तो है ही है, वो हमने सुनिश्चित की, उसको किसी प्रकार से इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये भी सुनिश्चित हुआ। परंतु उसके बावजूद कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो किस कानून के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि दुनिया भर में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का कानून किसी न किसी स्वरूप में हर देश में, हर क्षेत्र में लागू है। लेकिन ये चूँकि ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी देश की प्रभुसत्ता इस पर नहीं है, इसलिए भारत का कानून भारत के हिस्से के क्षेत्र में लागू हो, मात्र इतना इसका उद्देश्य है। The National Anti-Doping Bill provides for the constitution of the National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization International Convention against Doping in Sport and compliance of such other obligations and commitments. जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गुजरात में, हमने उसके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। वहाँ पर वो लैब भी स्थापित करेंगे और ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है इसकी टेस्टिंग को हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से करने की शुरुआत करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कदम इस दिशा में हम उठाने जा रहे हैं। The Central Universities Amendment Bill 2022 seeks to amend the Central Universities Act of 2009 to provide for the establishment of Gati Shakti Vishwavidyalaya as a body corporate. यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में फंडिंग, जैसा मैंने आरंभ में कहा, ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 166 करोड़ इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। प्लस जो बिल्डिंग बन रही है इसकी नई, इसकी जो बिल्डिंग बनेगी उस बिल्डिंग के लिए अलग से एक और बजट बन रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी पब्लिक फंडिंग, पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है। In the Rajya Sabha, one short duration discussion under Rule 176 was held on rising prices of essential items. In the Lok Sabha, one short duration discussion under Rule 193 was held on price rise. After weeks of disruption in Parliament over price rise, both houses discussed the issue. किसी भी विकसित देश में जो मापदंड है वो ये है कि 2/3 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज की तारीख में लगभग भारत में 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है और अगर हम विकसित देशों के श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो इसको 84 करोड़ पर लेके जाना जरूरी है। इसके बाद आप ब्लैक मनी की बात करते हो, आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हो। फिस्कल डेफिसिट क्या है? आप ये समझिए 1950 से लेके 1990 तक देश की स्थिति 1950 से लेके 1965 तक बहुत अच्छी चल रही थी सर। 65 के समय जीडीपी का केवल 4% हम बाहर से कर्ज ले रहे थे। 65 के बाद इस कांग्रेस ने उसकी पूरी दिशा और दशा बदल दी सर। 10 years ago, when cess was collected by the government,
of the total cess and surcharge collected, 10% was cess and surcharge 10 years ago. Now that number has gone from 10 to 20%. It is a taxation without legislation. Inflation, according to me, it's my own interpretation, is violative of Article 38 of the Indian Constitution. Permit me to read it in verbatim. Quote, the state, that is the central government, shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate the inequalities in status, facilities and opportunities. Finance Minister Nirmala Sitharaman addressed the concerns of the members and said there was no question of India getting into recession or stagflation. The Finance Minister said that the entire world is reeling from COVID pandemic and war, yet India's economy has performed well despite humongous challenges. She said India recovered admirably from all the challenges and the Reserve Bank of India and the centre's decisions helped in stabilizing the economy. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adirji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please. Mani Sadash, please. No. There is zero probability of India slipping into recession. Pandemic, second wave, Omicron, India, Russia, Ukraine, supply chain, even today, largest supply component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below. And that has got to be recognized. President Droupadi Murmu scripted history by becoming the country's first tribal president, defeating opposition nominee Yashwant Sinha. President Murmu is second woman to become the nation's first citizen and the Supreme Commander of Indian Armed Forces. The President of India is elected by an electoral college comprising of members of Parliament and all the state assemblies, including the National Capital Territory of Delhi and the UT of Puducherry. The monsoon session also witnessed President Droupadi Murmu taking oath of office in the historic Central Hall of Parliament. Former Jharkhand Governor and NDA's Droupadi Murmu was elected as the 15th President of India, the first tribal woman to be elected to the position and the youngest as well. She was declared elected after 4 rounds of counting, although she had crossed the halfway mark after the 3rd round of counting itself, posting an unassailable lead over her rival and the opposition's candidate Yashwant Sinha. टोटल वैलिड वोटों की संख्या है 748, जिनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 5,23,600। इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, जिनकी वैल्यू है 3,78,000, और श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,45,600। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से ये ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। यह पूरी सूचना इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी फॉर्म नंबर 7 के जरिए। She was sworn in by Chief Justice of India, N.V. Ramanna, at the Central Hall of Parliament. मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगी और
मैं भारत की जनता की सेवा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। और कल्याण में निरत रहूंगी। Mr. Jagdeep Dhankhar was elected as the 14th Vice President of India. He defeated joint opposition candidate Margaret Alva and secured 528 votes. Members of both Rajya Sabha and Lok Sabha voted at Parliament House in New Delhi to elect the Vice President of India. National Democratic Alliance candidate and former West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar was elected as the 14th Vice President of the country. He secured 528 votes in the 16th Vice Presidential election held in Parliament. The quota necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankhar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, Utpal Kumar Singh, the Returning Officer for the Vice Presidential Election 2022, hereby declare that Shri Jagdeep Dhankhar, Raj Bhavan, Ward 45, Hare Street, Kolkata 700001, has been duly elected to the office of Vice President of India. The election of a Kisan Putra, Jagdeep Dhankhar, to the second highest office is a testimony to the tenets enshrined in the vibrancy and strength of Indian democracy. India's Vice President personifies the phrase, from humble beginning to the pinnacle of success. It takes a diverse set of skills to outgrow modest circumstances and ascend the pinnacle. Vice President Jagdeep Dhankhar has been in public life for nearly 3 decades, a legal doyen, a philanthropist, a writer, a reader, an orator, and a politician. He has donned many hats and excelled in all of them. मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Parliament also hosted farewell for former President Ramnath Kovind. In his farewell speech, former President Kovind asked political parties in the country to shun partisan politics in the national interest and decide what is necessary for the welfare of the people. Former President also asked the citizens to use Gandhian principles to express opposition and pursue demands. Speaking at the ceremony, former President Ramnath Kovind said that he was eternally grateful to the people of India and for giving him an opportunity to serve the country as the President. He thanked former Chairman of Rajya Sabha, M. Venkaiah Naidu, and Speaker of Lok Sabha, Om Birla, for the way they have conducted the proceedings of Parliament and continued its great traditions. He said, the President is an integral part of parliamentary family and despite its differences, the interest of the nation is the top priority. In the Rajya Sabha, members bid farewell to the outgoing chairman of the House. Mr. Naidu's term came to an end on August 10th. Members commended the chairman's leadership for upholding the dignity of the House and encouraging young MPs. Members also appreciated the chairman's initiative to make it possible for them to participate in debates in their own languages. Parliament also accorded farewell to outgoing chairman M. Venkaiah Naidu, with PM Modi and several other leaders and members pouring their hearts out in the praise of various aspects of Mr. Naidu.
Leaders referred to him as a disciplinarian who stuck to rules impartially in setting high standards in running the House. इस सदन की प्रतिबद्धता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है। सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आपके मार्गदर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनिक भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। कुछ चीजें जो बगैर आपके कहे व्यक्तित्व से जो आपका सीखा, वो मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आपके आचरण से, कार्यशैली से, समय की पाबंदी, और जो गांधीयन लीगेसी थी, जो गांधी जी कहा करते थे कि इनडिसिप्लिन इज वायलेंस, उस तरह आपने किस तरह स्वानुशासन को जीवन में उतारा। देश के प्रति आपका लगाव, मिट्टी के प्रति लगाव, यह हमने जाना। पर बड़े शालीन तरीके से रखें। उनका आग्रह रहता है कि शालीनता नहीं खराब होनी चाहिए। वाद विवाद शब्दों का हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद ना किया जाए। और मैं समझता हूँ ये उनकी एक विशेषता रही कि उन्होंने कोशिश की कि सब साथ में मिलके सदन सुचारू रूप से चलता रहे, अच्छी तरीके से चले। और तीसरा जो मैंने ट्रेनिंग की बात की, व्यक्ति निर्माण, ये इनके शायद स्वभाव में ही है। कोई भी विषय हो, बीच में कभी किसी की स्पीच भी चल रही हो तो माननीय वेंकैया जी कुछ ना कुछ सुझाव देंगे, क्या कैसे बोलना चाहिए, क्या शब्द इस्तेमाल करना ठीक है नहीं है। एक कंटिन्यूअस टीचर का जो इनका स्वभाव है, लोगों को ट्रेन करने का जो स्वभाव है, इसका मैं समझता हूँ हम सभी को अलग अलग समय पे लाभ मिला। और ये लाभ जिंदगी भर हम सब माननीय सांसदों के साथ रहेगा। 11 अगस्त 2017 को सभापति के रूप में अपने प्रथम भाषण में कहा था कि मुझे सभा के दोनों पक्षों की संवेदनाओं, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों, विशेष अधिकारों और भावनाओं और कुछ अवसरों पर उनकी हताशा की जानकारी है। आपने अपने स्तर पर प्रयास किया, कई तरह के बदलाव की कोशिश के लिए आप सक्रिय रहे और आपने इस बात की पैरवी भी की कि सभी प्रमुख राज्यों में अपर हाउस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने। इसी तरह महिला आरक्षण बिल पर सहमति बनाने और कई दूसरी बातें आपने खुलकर कही। मुझे भरोसा है कि सरकार ये काम जो आप अधूरा छोड़ के जा रहे हैं उसको पूरा करेगी। We are the largest parliamentary democracy in the world. We are very fortunate that our forefathers and the constitutional makers and also the great freedom fighters have given their life and their best to the country and gave us the great constitution and this parliamentary democratic system. Nobody has forced it on us, we have taken it on ourselves. In a parliamentary democracy, parliament, that means upper house, lower house, legislative assembly, council, wherever you take this, and then the local bodies, panchayat raj, these three tier are very important. So in this, we being the upper house, house of elders, we have a greater responsibility. The entire world is watching India now. India is on the race. India is on the move. Keeping that in mind, we members of Rajya Sabha and you members of Rajya Sabha, and in future we are all going to come to this house, I only appeal to them to maintain decency, dignity and decorum. A persistent stalemate between the government and the opposition over demands to discuss price rise, GST-related issues and Agnipath, the new recruitment scheme of the armed forces,
led to the monsoon session of Parliament being among the least productive. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sansad TV. Namaskar.